कोई बात नहीं। तो very good evening, friends. Today we'll start with this Companies Act. We have already covered a lot of portions in this, and I've made all of you as co-hosts, so please keep on admitting people. So the syllabus starts somewhere like this. ये तो हमने lot of things we have already covered. कहाँ तक कवर कर लिया था? We were at NCLT rules ना? ये सब हम कवर कर चुके हैं. In second stage, what we will do, we will develop some difficult case studies. अभी तो ये तो these are not case studies actually, these are illustrations only. But these illustrations also will help you in getting a clarity on the subject. Now, based on this, we will develop some difficult case studies. एक बार कम से कम go through तो हो जाए ना. ये हो चुका है नहीं हुआ? ये हो गया ना? ये सब हो चुका है मेरे हिसाब से. This we have all discussed. है मैं तो जी? मैं एक क्लास नहीं किया, उसके लिए एक क्लास मिस कर गया. नहीं तो रिकॉर्डिंग तो हमेशा ही होती है. रिकॉर्डिंग तो होती है ना. सर ये नहीं हुआ है. ये नहीं हुआ? नहीं सर ये नहीं हुआ. ये हुआ नहीं हुआ? नो सर. No. ये वाला भी नहीं हुआ? No. लास्ट क्लास में मैं एनसीएलटी और एनसीएलटी उतना तक किया. यस सर. ये एनसीएलटी. तो ऐसा 407 411 ऐसा करते हैं. We will start with NCLT and NCLT and then we will move on to removal of names. ठीक है ना? और बाकी फिर बीच में जैसे जैसे टाइम मिलेगा we will cover it. No issues. नहीं तो आप खुद भी कवर कर सकते हैं इसको जब आपको टाइम मिले. हाँ तो अभी NCLT और NCLT में so what you can do on your own, you develop a case study. You develop a case study like 6 people have been called for interview and they have got the following qualifications. Okay? Then you prepare a chart of these 6 persons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One is a judge of the High Court. Second is a judge of the district court. Then third is an advocate. Fourth is a person who is proficient. Or is tarah se. And then you will say for which post they are eligible. For the post of chairperson, for the post of member, technical member, judicial member, like this. है ना? इस तरह से आप अपना केस स्टडी डेवलप करो. If you develop case study on your own, ना, you will understand things very clearly. ठीक है राजशेखरन जी? Yes sir. Yes sir. तो इस तरह से कर सकते हैं. ये तो हमने काफी कुछ I think we have covered some points इसके. राइट. ये सब सर नहीं सर ये नहीं हो. सर 12 या 13 क्वेश्चन तक ही हुए थे. 30 questions. नहीं ये हो गया. 30 questions completed. 30 हो गए. 30 questions over sir. ये सब कर चुके हैं हम. है राजशेखरन जी? हो चुका है? Yes sir. 30 questions over sir. 67 years age. ठीक है. 30 ऐसा questions. 30 क्वेश्चंस हुए हमारे. हाँ यस सर. यस सर. 30 हो गए. ओके अब 31 से करते हैं. ठीक है. सो नाउ वी आर एट. जब तक पता नहीं घर में तब तक ये क्लास चलती रहेगी. 9 बजे तक तो चलेगी. जस्ट अ मिनट.
Let me open my that website also. ये चैप्टर 17 है, ठीक है जी। अभी हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है 416 के ऊपर, ठीक है। तो 416 देखते हैं एक बारी कहाँ है। ये हमारा 416। तो 416 क्या बोलता है? वो बोलता है, ये भी आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन आल्सो, द प्रेसिडेंट, द चेयरपर्सन और एनी मेंबर may by notice in writing under his hand addressed to the central government resign from his office. Now ये जो 416 है ना, ये जनरल है, एनसीएलटी पर भी एप्लीकेबल है। देयर आर सर्टेन सेक्शंस which are applicable both on NCLT and NCLT, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट भी कवर कर लिया and they have covered chairperson also or any member. So what he has to do? May by notice in writing under his hand address to the central government resign from his office, provided that the president, the chairperson or the member shall continue to hold office until the expiry of 3 months from the date of receipt of such notice by the central government, or until a person duly appointed as his successor enters upon his office, or until the expiry of his term of office, whichever is earliest. Yes. So suppose now I ask you a question. President has resigned from office. The date of receipt of notice by the central government was 4th of, say, January 2023. Now, till 4th of April, he does not receive any intimation whether his resignation has been accepted or not. So, what is the course open to him? So 3 months have expired from the date of receipt of notice. So he can leave the office, basically, you can say, because there has to be a timeline also. Suppose the central government does not revert, say, even after 1 year, then what option he has? Suppose he has a plan to go to abroad to settle along with his son. So in such a situation, if he has tendered his resignation, so government has to accept it within a period of 3 months from the date of receipt of notice. If they do not do any such thing, if they sleep over the matter, then he can leave office, or until a person duly appointed as his successor enters upon his office. Suppose after 1 month only somebody else joined the office, then he can also leave, or until the expiry of his term of office, whichever is earliest. Term of office we have already seen. Total term is 5 years, and suppose he has already served for 2 years, then 3 years. So this is the section. Now let us see the question. What was the question? क्या question है देखिए? The president, the chairperson, or any member after his resignation to the CG shall continue to hold office until. So E, whichever is earliest. A, Yes. A or B or Yes. C. हाँ. So I think we have covered this question also. ये भी Yes, question sir. हमने cover कर लिया था last time. अब next question देखिए. हाँ. Let us see section 417. 417 देखते हैं एक बारी क्या बोलता है. Screen is not visible, sir. Just a minute. नहीं अभी visible है ना? Now, okay. Now Yes, visible. sir. So this is 417. So central क्या बोलता है? And I think we had discussed this question also. Yes, sir. Because we had discussed about point A also,
that in case he is adjudicated as insolvent, then even opportunity of heard being heard did not be given. So this point we had already discussed. So now let us again go back to the question. This is the question. Sir, E, all of the above. हाँ यही होना चाहिए. एक बार देख लेते हैं दोबारा. Let us read it again. ये है प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, मेंबर. तो कौन कौन कवर हो रहे हैं इसमें? प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन और मेंबर. President, chairperson. अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था. क्वेश्चन में लिखा था प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, मेंबर. तो मेंबर लिखा तो मेंबर दोनों का ही होता है, ठीक है ना. मेंबर ट्रिब्यूनल का भी हो सकता है, मेंबर एपेलेट ट्रिब्यूनल का ही होगा. तो ई विल बी द आंसर. मेरे को भी यही लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये देखिए D, sir. हाँ 417 एक बार दोबारा देख लेते हैं. Sir, Quickly. E will be the answer. ये देखो, ये एक बार देखो. अब आप देखो और लिखा सब है. ए के बाद और है, बी के बाद और है, सी के बाद और है. एक वन ग्राउंड इज सफिशिएंट. क्वेश्चन देखिए. दिस इज द क्वेश्चन. सारा तो जरूरी नहीं ना कि भाई इंसॉल्वेंट भी हो, कन्विक्टेड भी हो, फिजिकली मेंटली इनकैपेबल भी हो. इवन इफ वन ऑफ द कंडीशंस इज मेट, he can be removed. D is the answer, sir. हाँ, D should be the D will be the answer. D should be the answer. Yes, 33. Next question देखते हैं. 34 क्या बोलता है? The president, chairperson or any member who has abused his position as to render continue may be removed by the B is answer. D. B. हाँ B होगा. B for बेंगलुरु है ना. Yes, sir. ये भी हमने कर लिया था, मेरे को तो लग रहा है. आप ये देखिए. D. Sir, D. हम्म True. हम्म ये लग रहा है. एक बार यहाँ देखिए. ये आ गया ना जो. ठीक है. बस ये है कि अपॉर्चुनिटी अभी घाट देना पड़ेगा, बाकी रिमूव कर सकते हैं. तो डी विल बी द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. The powers of the appellate tribunal may be exercised by the benches thereof to be constituted by the chairperson. 418 सेक्शन देखते हैं. पहले सेक्शन देख लेते हैं. सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन से थोड़ी और क्लैरिटी आ जाती है. ये सेक्शन है हमारा. ये 118A. हाँ ये देख लेते हैं. ये 18 है. बेंचेस के ऊपर ये क्वेश्चन.
जितनी भी बेंच होंगी कम से कम एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक टेक्निकल मेंबर होगा। ठीक है जी, सिंपल है। आप क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। Powers of the appellate tribunal may be exercised by the benches thereof to be constituted by the chairperson. True, sir. B. तो बी यहाँ देखिए ये, ठीक है ना। हाँ, तो बी हो जाएगा। ठीक, तो 36 में हो गया बी। अब अगला देखिए, a bench of the appellate tribunal shall have at least One judicial and one technical member. C, sir. ये आंसर सी आंसर होगा। C will be the answer. नेक्स्ट देखिए, the benches of the tribunal shall ordinarily sit at New Delhi. न्यू दिल्ली डी सर डी डी हो जाएगा। D. The CG may constitute 4191 देखते हैं एक बार। ये है एज में भाई नोटिफिकेशन, तो कोई ये लिमिट नहीं है भाई 5 करनी है 7 करनी है कितनी है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। सच नंबर ऑफ ब्रांचेस एज में भाई नोटिफिकेशन। ठीक है जी, तो अब इसका क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, तो क्या आंसर होगा? डी। हाँ, डी हो। एनी नंबर, कोई ऐसा ये नहीं है भाई 5 7 9, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, प्रिंसिपल बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी एट न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली New Delhi. New Delhi. न्यू दिल्ली। ये हो गया ये हमारा। अगला देखते हैं, the powers of the tribunal shall be exercisable by benches consisting of 2 members, out of whom one shall be a ये जुडिशियल मेंबर है ना टेक्निकल Judicial member A. and ये आंसर technical member. ये बात कर रहा है ट्रिब्यूनल की। ठीक है, तो 419(3) देख लेते हैं एक बार क्या बोलता है। ये 493. Yes, sir. ये है 419(3). By the benches consisting of 2 members, out of whom one shall be a judicial member and the other shall be a technical member. ठीक है जी, तो ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। A. नेक्स्ट देखते हैं, the tribunal may rectify any mistake apparent from the record at any time within, कितनी देर में कर सकता है? सेक्शन 420 है, सब सेक्शन 2 है। देखते हैं एक बार सेक्शन 420 पढ़ लेते हैं। Within 2 years। Within 2 years from the date of the order. हाँ, अब देखो एक बार ऐसा पढ़ लिया ना, याद रहेगा नॉर्मली, क्यों? Yes, sir. हाँ, तो इसमें 2 years है। 2 years. Order and amendment. आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई रेक्टिफाई करना है तो एक किस्म से दोबारा ऑर्डर पास करना है इसको, तो सेकंड टाइम ऑर्डर पास कर रहे हैं ना, तो 2 years। 43 देखिए क्या बोलता है, इफ एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल, देन द ट्रिब्यूनल शैल हैव नो पावर टू अमेंड द ऑर्डर पास बाय इट। अब अगर अपील हो गई तो क्या अमेंड कर सकता है ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर?
ये आपका आंसर लिखा हुआ है सेक्शन 420 सबसेक्शन 2 में। देखते हैं क्या लिखा है। ये लिखा, प्रोवाइडेड दैट नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड। Preferred under अगर अपील हो चुकी है तो नहीं अमेंड कर सकते। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? True. C. C. राइट, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल मे बी प्रेफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ कितने 45 दिन में 45 अपील करनी होती है? 45 days, sir. 45 45 days. ट्राइब्यूनल ट्रिब्यूनल को अपील कर रहा है, मतलब 30 days, एनसीएलटी के 30 ऑर्डर days. के अगेंस्ट में। 30 days. 45 days, sir. In IBC only it is 30 days. In Companies Act it is 45 days. Yes. राइट, अभी तो कंपनीज एक्ट पे चल रहे हैं हम, एक बार देख लेते हैं। 45 days. सेक्शन 420 सब सेक्शन 2 देख लेते हैं क्या बोलता है। ये है ये है 421 है। Within a period of 45 45 days. days। 45 days. तो 421 का 3 हो गया। ये कुछ सेक्शन गलत लिखा है इसमें, 421 3 हो जाएगा इसमें। सर आईबीसी में 30 डेज है, आईबीसी में। IBC 35। ये तो कंपनीज एक्ट है ना हमारा। राइट राइट राइट। भाई कंपनीज एक्ट में तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से आंसर करेंगे ना। हम्म। इसमें वो लिखेगा वैसे, क्योंकि अगर ऐसे ऊपर ही लिखा हुआ तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कंपनीज एक्ट में अपील हो रही है, कहाँ हो रही है। या तो वो सेक्शन का रेफरेंस देगा, राइट है ना, राइट। या अंडर कंपनीज एक्ट। इसको हम ऐसे कर देते हैं, अंडर कंपनीज एक्ट, इतना देते हो क्यों, राइट। है Yes, ना, sir. ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? B. 45 days. 44 का बी हो गया। B. 45 days. नेक्स्ट 45 days. क्वेश्चन देखते हैं, an appeal to the appellate tribunal may be preferred even after the expiry of the period of 45 days from the date of the order of the tribunal, but within a further period not exceeding 45 days, sir. This is also 45 days. 45 plus 45 days. ओके। और ये सेक्शन कौन सा है आपका? IBC 30 plus 15. हाँ राइट, Here it is a 45 plus 45. आईबीसी 30 plus 15 is a 45 plus 45. 45. हाँ ये रहा ना, प्रोवाइडेड आ गया ना। हाँ, तो आपका 421 का 3 का प्रोवाइजो। So the reason for difference, sir, both are under the Companies Act. Why this difference actually? Both are in NCLT is formed only in the Companies Act. The reason for this difference, sir? भाई कंपनी एक्ट एक्चुअली only some of the provisions related to say insolvency or bankruptcy, they have been brought in IBC, but Okay. other provisions are there in the parent act itself. Okay. अभी तो Companies Act has not yet been abolished ना, Okay. so Companies Act, there may be some other reasons also, maybe other than IBC, because IBC is a time bound mechanism. Yes, sir. Yes. तो प्रोवाइजो ये है हमारा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी, है ना। 45 का आंसर हो गया हमारा बी। आई होप यू आर राइटिंग द आंसर्स आल्सो, है ना, अदरवाइज आंसर शीट तो मिलेगा ही आपको बाद में। द अपीलेट ट्रिब्यूनल में डैश the order appealed against after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard. Sir, D. ठीक हो जाएगा। Either A or B. हाँ Or इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहेगा कंफर्मिंग, मॉडिफाइंग और सेटिंग असाइड। तो 421 का 4 हो गया ये।
ये लड़के ने क्या किया, नीचे ना कॉपी पेस्ट कर दिया, बस सेक्शन नंबर चेंज नहीं किया। कोई नहीं, हम चेंज करते जा रहे हैं साथ साथ में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए, every application or petition presented before the tribunal shall be dealt with and disposed of by it as expeditiously as possible, and every endeavor shall be made by the tribunal for the disposal of such application or petition within 2 months. अच्छा, तो अब ये हमारा सेक्शन, ये सेक्शन कौन सा है, पहले तो हमें सेक्शन देखना। ये सेक्शन अगला होगा मेरे ख्याल, इसका 424 होगा ये 422 है। क्या बोलता है ये, विदिन 3 मंथ्स 3 months. है ना। तो 422 का 1 है। तो क्या आंसर हो गया इसका? 3 months, B. हाँ, बी B. आंसर हो गया। अब देखिए, एवरी अपील filed before the appellate tribunal shall be dealt with, disposed of expeditiously for the disposal of such appeal within तो पहले और इस सवाल में फर्क क्या है? अच्छा, ये एप्लीकेशन की बात कर रहा है, पिटिशन बिफोर द ट्रिब्यूनल, और ये बात कर रहा है एपेलेट ट्रिब्यूनल की अपील। अपील का डिस्पोजल टाइम कितना है? एप्लीकेशन का डिस्पोजल टाइम आपका 3 मंथ्स था, ठीक है ना। 1 month शायद। अभी अपील का कितना टाइम है, एक बार देख लेते हैं एक्ट में क्या लिखा है। ये एवरी, इससे अगला सेक्शन होगा मेरे के लिए, है ना, 423 में होगा ये नहीं, 422 में ही है वो, तो फिर अपील में आ गया। within the period so specified, अब सो स्पेसिफाइड तो फिर रेगुलेशंस आना चाहिए इसका। रेगुलेशन तो यहाँ पे दिया नहीं, रूल्स में दिया होगा। एक बार दोबारा देखते, प्रोसीजर लिखा ना। Sir, it is written there. 90 days. Same section. 90 days. है Either application or appeal. दोनों लिखा है वहाँ. ओके, The third line, 422(1) for हाँ, disposal of such application or petition or appeal. No? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। Within 3 months. 3 मंथ्स ही है, इसका भी पीरियड 3 मंथ्स ही है, तो 422 का 1 हो जाएगा ये। So here also it is 3 months. So whether it is for petition or whether it is for appeal, in both the cases period is 3 months only. 3 months है ना? Yes. Yes, sir. तो 48 का हो गया हमारा बी। ठीक है, अब ये देखिए, द पीरियड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एन एप्लीकेशन और पिटिशन और अपील मे बी एक्सटेंडेड विद ए फर्दर पीरियड ऑफ 90 days. B, sir. B, 90 days. 90 डेज है। एक बार देख लेते हैं। नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। Not accident. हाँ, तो 422 का 2 हो जाएगा ये सेक्शन 422 सब सेक्शन 2। तो इसमें क्या हो गया हमारा 90 डेज, तो आंसर हो B गया will बी। be the answer. B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An appeal to the Supreme Court may be preferred on any B, sir. 90 days. This is also 90 days. नहीं, क्या बी रहेगा डी रहेगा, क्या होगा? B, sir.
बी Question मतलब of बी law, फॉर, D. Question of law, D. हाँ Question of डी law. होगा। जी 423 देख लेते हैं एक बारी, पढ़ लेते हैं सेक्शन में क्या लिखा। तो सेक्शन भी साथ साथ पढ़ लो, सही रहता है। ये है विद इन 60 days ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो 60 days है सर, Yes, sir, 90 days. है Yes, sir, 9. ये Within 60 एक्ट आपके days. सामने है। आईबीसी में 60 डेज है। नहीं, ये तो हम कंपनी से पढ़ रहे हैं भाई, या तो आप ये बताओ ये गलत है। ना ये 60 डेज ही है। मेरे पास बुक भी है। ये तो देखो वेबसाइट है, वेबसाइट वाला क्या करता है, ये तो सर्विस प्रोवाइडर देता है हमारे को, बट हम बुक से भी देख लेते हैं, बुक में भी क्या लिखा है, बुक मेरे सामने है, अभी देख ले तो। मैं तो देखो जितने बुक्स होती है सब खरीदता हूँ, बुक्स खरीदने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। विद इन 60 days है बुक में भी। ये बिल्कुल लेटेस्ट है मेरे पास, 2023 का। तो 60 days है सर। राजशेखरन जी आप तो मरवा दोगे हमारे को। Website it is sir, 90 days sir. कौन सी वेबसाइट? भाई देखो मेरे पास बेयर एक्ट भी है, मैंने आपको अपनी वेबसाइट पे भी दिखा दिया सॉफ्टवेयर, और मेरे पास इसका टैक्समैन वालों का लेटेस्ट है 2023 का। भाई बुक में कोई गलत भी हो सकता है, तो क्या आंसर होगा इसका? 60 डेज सी C, होगा, C will be the answer. इज आंसर। सी आंसर होगा। Question of law. 60 days. The period to file an appeal before the Supreme Court may be extended by the Supreme Court. तो क्या होगा Sir, 60 days. हाँ, इसमें भी 60 है, अभी पढ़ा हमने। 60 days only. 423 है भी, ठीक है। इसका आंसर भी 60 days ही है। देखो अब याद रहना चाहिए, है ना। 51 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The tribunal and the appellate tribunal shall not, while disposing of any proceeding before it, or the case may be an appeal before it, be bound by the procedure laid down in Code of Civil Procedure and shall be guided by the principles of natural justice. Section 424 देख लेते हैं एक बार, सेक्शन 424 क्या बताओ। ये है सेक्शन 424। Code of Civil Procedure and subject to other provisions of this code, or of IBC, दोनों लिख दिए इसे, बाद में आईबीसी भी लिख दिया। कोड ऑफ सीपीसी है और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस 424 का 1 है। तो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। ये है, तो क्या आंसर होगा? A, हम्म, अभी मिलाएंगे भी आंसर 53, शायद 66 है। कितने क्वेश्चन है सर? बस, ज्यादा नहीं है, 62 ही है। अभी हम कहाँ पहुंच गए? 50, 53, sir. ये तो हो गया ना। 52 हो गया, ठीक है। Yes, sir. 53. 53 देखिए। The tribunal and the appellate tribunal shall have, for the purpose of discharging their functions under this code or of the IBC, the same powers as are vested in civil court while trying a suit in respect of the matters. क्या क्या इसमें आएगा? Summoning and enforcing the attendance आएगा, requiring discovery and production of affidavit, receiving affidavits on affidavit, issuing commissions for the examination of witnesses, setting aside any order of dismissal of or any representation for All of the default above. of F, sir. All of the above. setting। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी मेरे को गलती लग रही है, एक आध वर्ड मिस्टेक लग रही है। सेक्शन 424 में पढ़ लेता हूँ एक बार।
dismissing the setting of dismissal of any representation for default. ठीक है। हाँ, तो क्या आंसर होगा आपका? F, all the above. F, all of the above. ठीक है। अगला, any order made by the tribunal or the appellate tribunal may be enforced by the tribunal in the same manner as it if it were a, ये तो सिंपल है। डिक्री होगा और क्या होगा? इसका आंसर तो डिक्री होना चाहिए। C, है ना? C, right. हाँ। ये 424 का 3 है ना? हाँ, अब अगला देखिए। The tribunal and the appellate tribunal shall have the same jurisdiction, powers and authority in respect of contempt of themselves as the High Court has. तो ट्रिब्यूनल के पास भी वही पावर है जो कि हाई कोर्ट के पास है। ये सही है या गलत है? सेक्शन 425 सही है, ठीक बात है। B. हाँ, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। Public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code means, पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आते हैं? सर सी, both A and B. both A and B. Both A and ये B, आपका sir. सेक्शन 427 है। The president, members, officers and other employees of the tribunal and the chairperson, member, officers and other employees of the appellate tribunal. हाँ, तो Sir, सही there is some disturbance from other side. तो ऐसा ना मैडम, हमने कोस्ट बना रखा, आप म्यूट कर दो उनको। आप उनको म्यूट कर दो ना, कहाँ से आवाज आ रही है आपको पता होगा, जहां से आ रही है म्यूट कर दो उनको बस। तो 56 में क्या हो गया? बोथ है, सी हो गया ना? Yes, सी sir. आंसर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए क्या होता है। मेरा भी कई बार ध्यान नहीं रहता, आप खुद आपको कोस्ट इसीलिए तो बनाया है भाई, आप म्यूट कर सकते। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग shall lie in respect of any loss or damage caused or likely to be caused by any act which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act by, ये सेक्शन 428 है। वो ये कहता है कि भाई ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल में गुड फेथ में कोई काम कर लिया तो उनका कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। जी सर, हाँ सही है जी, ये सारे ही इसमें कवर्ड, लिक्विडेटर भी All कवर्ड the है। above. लिक्विडेटर भी cover। All of the above, sir. G. हाँ हाँ जी हो जाएगा। हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़े डिफिकल्ट बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन, बट चलो इससे कम से कम सेक्शन तो पढ़ रहे हैं ना हम, मेन बात ये है। ये प्रिलिमिनरी तो ठीक है। नो एक्ट ऑफ द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर done in pursuance of section 429 shall be called in question in any court or before any authority on any ground whatsoever. ये 429 है। सही है, ये 429 का 3 है। तो आंसर क्या होगा इसका? ट्रू हो जाएगा, है ना? 58 का बी हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखिए। नो सिविल कोर्ट shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the tribunal or the appellate tribunal is empowered to determine by or under this act or any other law for the timing in force. True, sir. सिविल कोर्ट के बारे में कौन सा सेक्शन है हमारा? 430। 430। 430. ठीक है, तो सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 59 का हो गया है हमारा डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी क्वेश्चनड और शैल बी इनवैलिड merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the tribunal or appellate tribunal.
ये भी सही लग रहा है? Yes, sir. True, sir. हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा D. डी। D, D. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग और अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या क्या कर सकती है? To perform the appeal. जी सर, तो सबको बुला सकते हैं। ये सेक्शन है हमारा 432। मैं बेयर कोड से पढ़ देता हूँ, ये बेयर कोड दिखाई देता हूँ आपको, तो वहाँ आप खुद पढ़ लोगे, ज्यादा सही रहेगा। Yes, sir. ये देखिए, ये है आपका बेयर कोड। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर, एनी अदर पर्सन, सारे ही हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। Yes, yes, first accountant, Krishna. तो जी हो जाएगा आंसर इसका। Yes, sir. जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट shall apply to the proceedings or appeals before the tribunal or the appellate tribunal। 433। True, sir. True. True, sir. हाँ, True. ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका। अच्छा, इसका आंसर शीट अगर आप मिलाना चाहते हो तो यहाँ पर ये आंसर शीट दिया हो, ठीक है जी। ये आप अपने आप मिलाते रहना, इसमें कोई खास बात नहीं है। मेरे हिसाब से आपने आंसर नोट किए होंगे, और नहीं भी किए तो आप मिला लीजिएगा इसको, तो कोई बात नहीं। अब हम रिमूवल ऑफ नेम्स पर चलते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपसे शेयर की हुई है ना ये पीपीटी, Yes, sir. है ना। हाँ, ठीक। अब हम रिमूवल ऑफ नेम्स पे चलते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करते हैं। ये तो हमारा एनसीएलटी पर था। कुछ आइडिया तो देखो हमें हुआ ना करने के बाद। ये रिमूवल ऑफ नेम्स करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो 248 टू 252 है, ये चैप्टर आपका 18 आता है, ठीक है। तो मैं इसमें भी चैप्टर 18 भी खोल लेता हूं पहले। ये आपका चैप्टर 18 आ गया, ठीक है जी। इसमें 4-5 ही सेक्शन है, ज्यादा नहीं है, 5 सेक्शन है टोटल। ये 248 आ रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, रीड द क्वेश्चन। राजशेखर जी पढ़ना जरा एक बार। Yes, sir. Where the registrar has reasonable cause to believe that a company has failed to commence its business with 1 year of its incorporation, it is sufficient cause to remove the name of the company from the register of companies. So true. तो आंसर इज डी। Yes. और इसका सेक्शन देख लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑल्सो, वो भी जरूरी है, ये है ना। तो 248 का 1A, सेक्शन 248 1A इज द सेक्शन। तो वी हैव टू राइट द सेक्शन ऑल्सो, यहाँ पर हम सेक्शन भी लिख देंगे। 248 1A. हाँ, सेक्शन 248 1A, ठीक है जी। अब चलिए आगे, नाउ पढ़िए एक बार। A company is not carrying on business or operation for a period of 2 immediately preceding financial years and has not made any application within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455. Would it be a sufficient cause for the registrar to remove the name of the company from the register of companies? Yes. तो सही है। क्या सेक्शन है इसका? सेक्शन वही चलते हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं। ये 248 का 1 का सी है, ठीक है जी।
तो 248(1) C दी सेक्शन, यहाँ हम सेक्शन भी लिख देंगे। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा आंसर, तो इसका यस ही हो जाएगा, लेकिन हमें सेक्शन भी लिख देना है तो थोड़ा आइडिया रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, पढ़िए प्लीज। Register may remove the name of the company from the register of companies if the subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company, and a declaration to this effect has not been filed within 180 days of its incorporation under subsection 1 of section 10A. The company is not carrying on any business or operations as revealed after the physical verifications carried out under subsection 9 of section 12. C. Either A or B. D. Either A or B or both. Either A or B or both. D. Not carrying any business. बस C है मेरे हिसाब से, C is sufficient. Why you will go to D? Yes, C is sufficient. हाँ, Anyone is if, sufficient. any one condition, if it is not fulfilled, Yes, then yes. we will remove. We can remove. And the section will be 248(1) D and E. इसका जो सेक्शन है वो है 248(1) D and E, ये सेक्शन, ये यहाँ इसको ऐसे D and E। अगला देखिए, a company may file an application in the prescribed manner to the registrar of companies for removing the name of the company from the register of companies. All of the above. ये Sir, all of 248 the का 2 above. हो जाएगा इसका आंसर। E is answer. इसका आंसर होगा सेक्शन 248(2). तो आंसर क्या होगा? Answer. आंसर what will All be the the answer? above. All the All above. of the above. E, sir, all of the above. नेक्स्ट देखिए, A company shall stand dissolved on publication of notice of removal of name of company from the register of companies in the official gazette, and after striking of its name from the registers of company by the registrar. तो 48 तो क्या है, सही है गलत है? तो 48(5) एक बार देख लीजिए, लेट मी शो यू सेक्शन 248 सब सेक्शन 5, ये है आपका 248(5), ये at the expiry of the time mentioned in the notice, the registrar may, unless to cause to the contrary is shown, strike off its name from the register of companies and shall publish notice thereof in the official gazette, and on the publication in the official gazette of this notice,
द कंपनी शैल स्टैंड डिसॉल्व। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन में उल्टा कर दिया इसको। तो बात तो सही है, ट्रू ही है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूटीज क्या है? The duties of the registrar before passing an order under subsection 5 of section 248 involves satisfy himself that sufficient provision has been made for the realization of all amount due to the company. B. Adequate provision has been made for the payment or discharge of company's liabilities and obligation by the company within a reasonable time. Obtain necessary undertaking from the managing director or other persons in charge of the management of the company. D. All of the above. D, all of the above will be the answer. Basically, these are illustrations on sections and subsections just to understand the provisions. But once we develop this basic understanding, then we will develop some complicated questions. पहले तो पढ़ना ही जरूरी है ना, अभी तो समझ लो हम मैथ को ही पढ़ रहे हैं। Even if the company had been dissolved under subsection 5, the liabilities of every dash of the company dissolved shall continue and may be enforced as if the company had not been dissolved. F, either A or B or C or D. हाँ, सभी का ही रहेगा। F will be the Yes, answer. yes. एफ होगा या ई होगा? Oh, E is the right answer. Director, anyone, every. F is a suitable level. F it's एफ सर। F. अभी देख ले कि ई आएगा या एफ आएगा, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, even if the name of the company has been struck off from the from the register of register, company, the power of the tribunal to wind up a company shall not affect any way. It's true only. True only. ठीक है। हाँ, they can restore the name of the company. तो ये हो रहा है हमारा ट्रू। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, If a company has changed its name or shifted its registered office from one state to another at any time in the previous dash, it may not file an application for removal of its name from the register of companies. तो क्या होना चाहिए? इसका क्वेश्चन आपका आंसर 249 में दिया हुआ। तो लेट अस सी सेक्शन 249। ये है 249, पढ़िए क्या लिखा। An application under subsection 2 of section 248 on behalf of a company shall not be made if at any time in the previous 3 months, 3 months the company has changed its names. 3 months. 3 months. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। 3 months. D will be the answer. ये देखिए, If a company has made a disposal for value of property
or rights held by it immediately before the cessation of trade or otherwise carrying on of business for the purpose of disposal for gain in the normal course of trading or otherwise carrying on of business at any time in the previous 3 months. It may file an application for removal of its name from the register of companies. It may not file an application for removal of its name from the register of companies. It may file an application for removal of its name from the register of company, subject to such conditions as may be imposed. None of the above. It may file an application for removal of its name from the register of companies. C is the right answer. It may file an application for removal of its name from the register of बल्कि company. it may क्या it cannot file होना चाहिए, या तो it cannot file होना चाहिए क्योंकि वर्ड उसमें shall है, Not for removal of its name from the register of company. Yes. क्योंकि अगर आप ये देखो Then B answer. ये है क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है an application shall not be made. Shall not ठीक है be. ना, पहला चेंज, दूसरा has made a disposal, Has made a और कितना disposal for विद इन value of प्रीवियस property. 3 months. 3 months. Okay. Now again see the question. If a company has made a disposal for value of property or rights held by it immediately before the cessation of trade or otherwise carrying on of business for the purpose of disposal for gain in the normal course of trading or otherwise carrying on the business at any time in the previous 3 months. हाँ तो it cannot file an application. इसका 10 का आंसर होगा B. B, it cannot fail. हाँ, it cannot. File an application. Next देखिए, No application for removal of its name from the register of companies may be made by a company if at any time in the previous 3 months it has engaged in any other activity except the one which is necessary or expedient for the purpose of making an application under that section or deciding whether to do so or concluding the affairs of the company or complying with any statutory requirement. B, has made an application to the tribunal for the sanctioning of a compromise or arrangements and the matter has not been finally concluded. C, is being wound up under Chapter 1010 of this Act or under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. D, all of the above. Sir, answer will be D, all of the above. The above. all of the above. Either हो जाएगा, either A, B और C. E, Yes. sir, yes, sir. E. मेरे हिसाब तो E होना चाहिए, क्यों भाई, एक तीनों कंडीशन थोड़ी पूरी होनी जरूरी है, एक भी कंडीशन पूरी हो तो नहीं करेगा एप्लीकेशन, तो आइदर होनी चाहिए ना, क्यों? Yes, yes. Yes, sir. Either of the above. E, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं तो आंसर तो बाद में मिल ही जाएगा, देखते हैं. If इफ ए a कंपनी company फाइल्स एन एप्लीकेशन files an application under subsection 2 of section 248 in violation of subsection 1, it shall be punishable with fine which may extend to फाइन कितना है? 1 lakh rupees. हाँ बिल्कुल सही है, 249 का 2 है, ठीक है, तो 1 लाख रुपीज इज द फाइन, 12 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही. नेक्स्ट देखिए, an application filed under subsection 2 of section 248 shall be withdrawn by the company or rejected by the registrar as soon as condition under subsection 1 are brought to his notice, partially false
True. True, sir. True. True. बिल्कुल सही. ये आपका 214 इनका 3 है एक्चुअली. यहाँ 2 लिख दिया इसने, इसका है 3. नेक्स्ट देखिए. Where a company stands dissolved under section 248 is shall on and from the date mentioned in the notice under subsection 5 of that section cease to operate as a company, shall not be ceased to operate as a company, both A and B. A. A, sir. सही. ये हो जाएगा 14 का. 250 का. नेक्स्ट देखते हैं. The certificate of incorporation issued to a company Shall be deemed to have been cancelled from the date mentioned in the notice issued under subsection 5 of section 248. True, sir. The reason, sir? Reason? नहीं, ये इसका सेक्शन कौन सा? First. No? 250, only 250. हाँ 250 है. 250. फ्रॉम सच डेट लिख दिया ना, सच डेट, तो डेट ऑफ नोटिस ही आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा. इसका एक बार सेक्शन 250 पढ़ लेते हैं. ये हमारा 250 है. ये Where a company stands dissolved under section 248 is shall on and from the date mentioned in the notice. हाँ, यही क्वेश्चन था ना कि किस Yes, डेट, sir. ऑन विच डेट मेंशन्ड इन द नोटिस. From the date mentioned the notice under subsection 5 of that section. दैट cease- सेक्शन मींस सेक्शन 248. सही है. तो 15 का हमारा डी हो गया है. Yes. नेक्स्ट देखिए. Even if the certificate of incorporation issued to a company shall be deemed to have been cancelled from the date mentioned in the notice issued under subsection 5 of section 248, still the company may realize the amount due to the company, may make a payment or discharge the liability or obligations of the company, both A and B. D, either A or B. D, sir. Either A or B. Either A or B. बिल्कुल. हाँ, चाहे वो डिसॉल्व, डीम टू बी डिसॉल्व बन जाए, पर ये पेमेंट, ये काम तो करती रहेगी ना वो. और उसको कोई पेमेंट करनी है या कोई रिसीव करनी है तो वो कर लेगी, रियलाइज भी कर लेगी और पेमेंट भी कर देगी. Even if the company has been notified as dissolved, the person in charge of the management of the company shall be jointly or severally liable to any persons or persons who had incurred any loss or damage as a result of the company being notified as dissolved, if it is found that an application by the company under subsection 2 of section 248 has been made with the object of evading the liabilities of the company, with the intention to deceive the creditors or to defraud the creditors, with the intention to defraud any other persons. D, either A or B or C, all of the above. एक बार 251 पढ़ लीजिए. ये है. Where it is found that an application by a company under subsection 2 of section 248 has been made with the object of evading the liabilities of the company or with the intention to deceive the creditors or to defraud any other persons, the person in charge of the management of the company shall, notwithstanding that the company has been notified as dissolved,
be jointly and severally liable to any person or persons who are incurred loss or damage as a result of the company being notified as dissolved, and be punishable for fraud in the matter as provided in section 447 without prejudice to the provisions contained in subsection 1. The registrar may also recommend prosecution of the persons responsible for the filing of an application under subsection 2 of section 248. क्वेश्चन ये है either A or B or C. सही है Either A or B or C. डी होना चाहिए Even if the company has been notified as dissolved, the person in charge of the management of the company shall be punishable for fraud in the manner as provided in section 447 if it is found that an application by the company under subsection 2 of section 248 has been made in fraudulent manner. True. True, sir. True. D. True. D. ये आपका सेक्शन 251 ये देखिए Without prejudice to the provisions contained in subsection, the registrar may also recommend prosecutions of the persons responsible for the filing of an application under subsection 2 of the section 248. True, sir. A. सही तो 19 का आपका ये हो जाएगा ये आपकी आंसर शीट है Oh. आंसर शीट एक बार मिला लीजिएगा एक मिनट का मैं ब्रेक ले लेता हूँ लगता है कोई आया है मैं देख लेता हूँ With the intention to defraud any other persons, either A or B or C. Either D is the answer. Let us read this section again 251 ये है This is the text of the section. Now let us see the question. Sir, D. Either A or B or C. Because in section there are or. So D is the answer. Or D should be the answer. Yes. बिल्कुल सही है तो इसका हम आंसर भी ठीक कर देते हैं वहां इसको डी कर देते हैं तो यहाँ इन्होंने ई लिख दिया है ई गलत है आंसर ई नहीं होना चाहिए डी होना चाहिए ई में तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा लेकिन वहां और है सारा और विद इंटेंशन टू रिसीव और ठीक है तो अब ये भी सारा सही हो गया आपको ये छोटा सा ये कर लेते ये तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है बहुत ही छोटा सेक्शन रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स लास्ट ठीक है आज यही खत्म करेंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर बताइए क्या है इसमें कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर 17 मैं इसको वहां भी खोल लेता हूँ बुक में भी उस सीए और के उत्तर हटवा ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स कहाँ गया जी ये चैप्टर 17
एक ही सेक्शन है, वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूज। क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बहुत छोटे हैं, 5-7 ही क्वेश्चन। हाँ प्लीज देखिए, पढ़िए जरा। where valuation is required to be made in respect of any property, stocks, shares, debentures, securities, or goodwill, or any other assets herein referred to as the assets or net worth of a company or its liability under the provision of this act. It shall be valued by a person having a such qualification and experience and registered as a valuer. B. It shall be valued by the audit committee. C. It shall be valued by the board of directors of that company. D. All of the above. क्या आंसर? A, sir. A is the answer. हम्म, नहीं ये नहीं है। इसका आप सेक्शन पढ़िए एक बार जरा, सेक्शन में कुछ और ही नजर आएगा आपको, पढ़िए जरा। Where a valuation is required to be made in respect of any property, stocks, shares, debentures, securities, or goodwill, or any other assets herein referred to the assets as the assets or net worth of a company or its liability under the provision of Act, it shall be valued by a person having such qualification and experience and registered as a valuer in such manner on such terms and conditions as may be prescribed and appointed by the audit committee or its absence by the board of directors of that company. Yes, sir. That is only answer. तो क्वालिफिकेशन भी है, उसके Appointed अलावा by the अपॉइंटमेंट बाय ऑडिट कमिटी भी है, या yes. अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स Board की of अपॉइंटमेंट है। Yes, yes. आप क्वेश्चन देखते हैं नाउ, अगेन सी द क्वेश्चन। He only is answer. Sir, it is A because it A. is हाँ A. बिल्कुल He बिल्कुल। only answer. अच्छा इसका आंसर इसने क्या दिया देखते हैं, A only. Sir. यही दिया, ठीक। A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Basically, the appointment has to be by the audit committee, not Yes, the sir. valuation. Yes. Audit committee or And board of directors. in case audit committee is not there, then by the board of Board of directors. directors. Board of Directors. Board of directors. The registered valuer may be appointed by By the audit committee or board of directors. F answer. F is answer. F should be the answer. ठीक है, next देखिए। The valuer appointed under subsection 1 shall make an impartial, true, fair valuation of any assets which may be required to be valued. Exercise due diligence while performing the functions as valuer. Make the valuation in accordance with such rules as may be prescribed. D is the answer. D is the answer. TD. एक और भी कंडीशन है इसमें, एंड नॉट अंडरटेक वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट्स इन विच ही हैज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट और बिकम सो इंटरेस्टेड। अगला क्वेश्चन हो सकता है उस पर ही हो। हाँ ये आ गया। The valuer appointed under subsection 1 shall not undertake valuation of any assets in which he has a direct or indirect interest or becomes so interested at any time during 3 years, sir. It will come a period of 3 years before or after. Both A and B. So, both A and B. ठीक है, So D is answer. और सो सी शुड बी इसमें द जरा आंसर, सी होना चाहिए आंसर तो इसका। D is answer. डी क्यों होगा? Before and after. और लिखा ना, और लिखा Oh, एंड नहीं लिखा। आप एक मिनट पढ़ो ना, ये सेक्शन पढ़ो। and is right. नहीं यहाँ देखो ना, ये डी पढ़ो, 247 डी, नॉट अंडरटेक
not undertake valuation of any asset which he has a direct or indirect interest or become so interested at any time during a period of 3 years prior to his appointment as valuer हाँ or 3 years after the valuation of हाँ assets was conducted by him. हाँ, तो और लिखा ना बीच में, एंड तो नहीं है ना यहाँ, ये और है वर्ड। तो 3 years prior to his appointment or 3 years after the valuation. So at the time of valuation, it's a confusion. Sir. At the time of valuation, 3 years only sufficient. Before and after, that is only correct actually. Then meaning. और लिखा Sir, ना it's not word- clear how he will future का कैसे करेगा, मतलब if he is Sir, going to be and interested before in also, future, Future before कैसे? also, how can he not do the valuation now because he will not know. कैसे, क्या मतलब, समझा नहीं। earlier he फ्यूचर की क्या बात है, देखो ऐसा लिखा है भाई, ही वॉज अपॉइंटेड ऑन दिस डेट, ठीक है ना। वो क्या बोल रहा है कि पिछले 3 साल में वो इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है। प्रायर टू, सपोज ही इज अपॉइंटेड ऑन 1st of April 2023, ठीक है ना। तो ही हैज टू लुक बैक फॉर द प्रीवियस 3 years कि whether during the past 3 years he was interested in that transaction or not. Correct. If he is not, then he will carry out Yes. the valuation. Second point, a period of 3 years after the valuation of asset was conducted by him, ठीक है। आज आपने वैल्यूएशन कर लिया, कल आप डायरेक्टर बन गए, वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये समझा नहीं actually. क्या समझ में नहीं आ रहा है सर ये. सेकंड वाला पॉइंट हम्म. नहीं, फर्स्ट वाला तो क्लियर है ना। फर्स्ट वाला तो क्लियर है. सेकंड में क्या है, सेकंड में सपोज देयर इज ए वैल्यूअर, ठीक है। अब वैल्यूअर को आपने क्या किया, इंसेंटिव दे दिया कि भैया यू डू दिस वैल्यूएशन एंड वी विल मेक यू अ डायरेक्टर, हाँ हाँ, ओके. ठीक है ना, या वी विल गिव Understood. यू दिस पोजीशन, ये है। its Okay. right answer is A and वो D. कहेगा भाई आप हमें अकोमोडेट कर दो, हम आपको अकोमोडेट कर देंगे बाद में, ये है बेसिकली। तो आंसर तो सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। और लिखा ना, वैसे भी सेक्शन में भी आप देखो और लिखा वर्ड, एंड तो नहीं लिखा, ये है ना, और C will be the answer. है, C. सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए वैल्यूअर contraventions of the provision of this section or the rules made thereunder, the value shall be liability to a penalty of rupees 50,000. See, 50,000. 50,000. सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, If the valuer has contravened the provisions of this section, section 247, with the intention to defraud the company or its member, he shall be punishable with imprisonment with for a term of 1 year, fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may extend to 3 lakhs rupees, fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may extend to 5 lakhs rupees. D, both A and B. आंसर क्या होगा? E. हाँ, ई इज द राइट आंसर। तो इम्प्रिजनमेंट होगा फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 year, एंड फाइन भी होगा व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 lakh बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 lakh rupees। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Where a valuer has been convicted under subsection 3, he shall be liable to refund the remuneration received by him to the company, B, pay for damage to the company, pay for damages to any other person for loss arising out of the incorrect or misleading statement of particular made in his report. D. D, sir. Both and A and B. Pay for damages to any other persons. आंसर क्या होगा? So all of the above only D will be. D, sir. डी लग रहा। तो एक बार इसे मिला भी लेते हैं, इन्होंने क्या आंसर दिया? D. ए एफ डी सी सी ई, सही दिए, ठीक है। बस काफी है आज के लिए, इतना ही है ना। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। आप ऐसा करना
इस वाले को एक बार आप खुद देख लेना, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे ये वाला पॉइंट ना, आप एक बार देख लेना। आई एम अगेन शेयरिंग इट, ये मर्जर एंड अमेलगमेशन। So in next class we will be discussing this merger and amalgamation. I'll post in the group, है ना, when we are having the next class. So in the meantime, you please go through this PPT and I'm sharing it again, है ना? Please, Okay, please, sir. please, please. हाँ, ये ओके सर, okay, Thank you, Yes, sir. sir. Thank you, okay, sir. okay, okay, ओके, थैंक यू सर। okay जी, good Thank you, night. sir. और एक काम करो कि वो जो है ना मेरा जो फ्लायर है उसको थोड़ा सा आप प्रमोट कर दो भाई, जो नए लोग हैं, ताकि उनको तो आ जाए ना। आप तो पुराने पापी हो, आपको तो पास करवाना ही है मुझे, है कि नहीं? लेकिन नए जो लोग हैं, नए भी आते रहे तो सिलसिला चलता रहेगा ना, थोड़ा सा ये बात है। Okay, sir. तो आप ओके थोड़ा सा उसको करेंगे ना भाई, एक एक बंदा भी एक एक बंदे को ले आएगा, बहुत है और क्या, Okay, sir. है ना? हम तो अपना एफर्ट कर ही रहे हैं, और क्या।